हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं that नेट JRF by UGC is being conducted on 25th June और इस बीच हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट हैं for last minute notes on teaching aptitude which is a part of paper 1 UGC NET exam। तो हम उसी सीरीज में अपना टीचिंग एप्टीट्यूड जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, उसको कवर कर रहे हैं। देखिए, नेट एग्जाम का पर्पस क्या है? नेट एग्जाम का पर्पस है दैट यू विल बी क्वालिफाइड एज टीचर। और आप सभी ने एलएलएम की हुई है, जिसके अंदर आपको रिसर्च, टीचिंग, इन सब से रिलेटेड एक सब्जेक्ट मिला ही होगा। तो ऐसे में बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आपको लगने चाहिए जो भी हमारे इस सेक्शन से आते हैं। लेकिन स्टिल फॉर क्विक रिवीजन हम एक छोटा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन रखते हैं कि टीचिंग होती क्या है। व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग इज नथिंग बट एन आर्ट टू ट्रेन स्टूडेंट, जिससे कि एक टीचर स्टूडेंट को फैसिलिटेट करता है दैट ही और शी मे बिकम इंडिपेंडेंट, मे स्टैंड ऑन हिज और हर ओन फुट इन द मॉडर्न सोसाइटी। जो हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग, राइट? तो यहाँ पे हमारे तीन चीजें हैं, तीन फैक्टर्स हमारे इंटीग्रेट होते हैं: द टीचर, द स्टूडेंट एंड द एजुकेशन। नाउ देयर आर अदर क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस एग्जाम में, जो कि डायरेक्टली डील करेंगे द क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर। इस स्लाइड के अंदर मैंने कुछ 5-6 पॉइंट्स यहाँ पे एक्यूमुलेट किए हैं, जैसे कि a good teacher must identify the strength and weakness of students, teacher must be friendly, must have in-depth knowledge। बट ये आप सब भी जानते हैं कि मात्र नॉलेज हो जाने से कोई भी एक अच्छा टीचर नहीं होता है। सो द टीचर मस्ट बी मेंटली अलाइंड। द टीचर मस्ट अंडरस्टैंड कि उसके स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। और यहीं से स्टार्ट होता है एक टीचर का रोल। एक टीचर का रोल होता क्या है? as a resource provider, as a catalyst, as a classroom supporter, as a data facilitator, as a mentor, as a curriculum specialist। हम यहाँ पे लर्नर फॉर लाइफ भी एक टीचर को बोल सकते हैं। अभी यहाँ पर जो हम जैसे आपके साथ यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रीफ वीडियो शेयर कर रहे हैं थ्रू दिस पीपीटी, what am I doing? I'm acting as a catalyst for you. So these could be the role of teacher। यहाँ पे मैं बहुत ब्रीफ में छोटी छोटी स्लाइड बना के आपको बता रही हूँ। द पर्पज इज इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आते हैं। एक हल्का सा भी अगर आप यहाँ पर ओवरव्यू लेकर जाएंगे एक क्विक रिवीजन के पर्पज से, मोस्ट प्रोबेबली इट विल हेल्प यू आउट। यहाँ पे आपको कुछ और वर्ड्स भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा कोच, जो कि आज के जमाने में आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। Who is that person? That person is also a teacher acting in the role of a teacher, right? Then the other types of questions जो नेट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और कम से कम आपको 6 to 8 मार्क्स स्कोर कराएगा, that will be regarding the characteristics of a good teacher। So what are the characteristics of good teacher? यहाँ पे बहुत बेसिक है, आप अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि he or she must be passionate, inspiring, patience is the key, effective communication skills होने चाहिए, strong classroom management होना चाहिए, effective organization, planning, knowledge, expertise। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को रिव्यू करने की कैपेबिलिटी, राइट? द होल स्कीम of becoming a good teacher is to develop learners for the future, to enhance the skill of the students so that कोई भी उनके दिमाग में अगर डाउट है, कोई भी उनकी प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करते हुए उनको फ्यूचर के लिए किसी भी चीज के लिए हम तैयार कर पाए, राइट? नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हुए हम देखते हैं जो हमारी टीचिंग है इसके क्या स्टेजेस होते हैं, क्या इसके डिफरेंट फेजेस हो सकते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर हमने सजेस्टिवली आपको बताया है दैट टीचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 stages: द प्री एक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव स्टेज
पोस्ट एक्टिव स्टेज। रिएक्टिव स्टेज क्या है? जहां पे एक टीचर का काम है टू फिक्स अप गोल्स एंड कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम योर टीचर फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। यहाँ पे मेरा गोल क्या है? माई गोल इज टू कवर as much as possible the chapter 1 of UGC exam paper 1, which is teaching aptitude, and to take decisions. For example, यहाँ पे मैं आपके साथ लाइव क्लास ले सकती थी, यहाँ पे मैं एक छोटी वीडियो बना के आपको शेयर कर रही हूँ, so that it can be handy, आप अपने टाइम के हिसाब से उसको कभी भी देख पाए। The other stage, moving on to the stage 2, which is interactive stage, is the action reaction, the diagnosis of learners, which will follow up. I'll send you certain questions जो कि follow up करेंगे इस वीडियो के बाद। तो ऐसे में it becomes important कि आप यहाँ पर स्टेज 2 को समझे इंटरएक्टिव स्टेज की तरफ। रिएक्टिव इज समथिंग विच इज इन योर माइंड एज अ टीचर। इंटरएक्टिव इज वेयर आप देख रहे हैं कि आपने जो पढ़ाया, आपने जो बताया, उसका क्या एक्शन है, क्या रिएक्शन है आपके लर्नर्स पे। एंड थर्ड is the post-active stage. Post-active stage talks about the testing, the various tests that can follow up, and the feedback of the learners. So, coming to the next slide, the approach for teaching. यहाँ पर आपको 3 नाम मिलेंगे। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली हमसे ये पूछा जा सकता है कि रिफ्लेक्टिव लेवल अप्रोच किसने आउटले करी थी? Who was the founder of a particular approach? तो यहाँ पे 3 अप्रोचेस हैं। The basic, the first approach is memory level approach, यानी कि पिरामिड के जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है। This is the least thoughtful way of teaching. This was developed by Hunt. यहाँ पे हमारा पूरा फोकस है कि बच्चे की मेमोरी अच्छी हो, बच्चे को सब याद हो जाए, बच्चे को पोएम याद हो जाए, एबीसी याद हो जाए, या आपको सेक्शंस याद हो जाए। So this is the first, or we can say the primary, right? Then moving on to the other approach. Once your memory level game is over, आप किस लेवल पे जाना चाहेंगे? The understanding level. Understanding level is a thoughtful way, a thoughtful approach of teaching, which was developed by Morrison. And on the peak of the pyramid is the reflective level, which is the most thoughtful, and it was developed by Herbert. Reflective level does not only talks about understanding, but questioning, unlearning, criticizing, and then developing maybe a further new approach of understanding a topic. फिलहाल एग्जाम के लिए हमें ये 3 कीवर्ड्स याद रख लेने होंगे, और ये तीनों लेवल्स को हल्का सा एक टचअप हम करके जाएंगे। फर्दर मैं आपके साथ जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको शेयर करूंगी, so you will find how these particular slides are being related to the questions, the previous year questions which have been asked. Now coming to the next uh, subtopic of teaching aptitude, which is methods of teaching. एक अच्छे टीचर के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसका एक इफेक्टिव टीचिंग हो। इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है? इफेक्टिव टीचिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज। इफ यू डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, व्हाट आर यू गोइंग टू टीच, व्हाट आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन टू अदर्स? लेकिन क्या आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज हो जाने के बाद भी आप एक अच्छे और इफेक्टिव टीचर होंगे? नहीं। उसके लिए हमें 2 चीजें और चाहिए, दैट इज यू मस्ट नो योर लर्नर्स एंड यू मस्ट नो द पेडागोजी। नाउ व्हाट इज पेडागोजी? पेडागोजी इज द स्कीम ऑफ लर्निंग, राइट, जिसको हम आगे भी फोकस करेंगे। और यहाँ पर आपको अपने लर्नर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो किस लेवल पे हैं, डू दे इवन अंडरस्टैंड आप क्या बता रहे हैं, आप उनके साथ किस पॉइंट पे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो उस चीज को भी हम आगे कंसिडर करते हैं। सो फॉर इफेक्टिव टीचिंग वी हैव 3 इंस्ट्रूमेंट: in depth subject knowledge, you must know the learners, and you must know the pedagogy.
Now, what is pedagogy? Pedagogy is basically the science or the art of education. इसका मेन एम क्या है? एम है हमें एक ह्यूमन बीइंग को किस तरीके से स्किल एक्वायर कराए, व्हाट शुड बी द अप्रोच, व्हाट शुड बी द आर्ट, राइट? और वी कैन से व्हाट कुड बी द फॉर्मूला फॉर द सेम. Now, what are the common factors of education process? This is a question जो कई बार repeatedly नेट में आया है. That is why I have included this slide. There are four factors of education process: educator, educand. Educand means student, subject matter, and context. Now, coming to the pedagogy paradigm. देखिए, पेडागोजी का मतलब है किसकी, एक तरीके से एक फॉर्मूला जो हम डेवलप कर रहे हैं अपने लर्नर्स को, अपने स्टूडेंट्स को कोई भी चीज समझाने के लिए, फ्रेमवर्क हम कह सकते हैं. तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम समझें कि उनका स्टेप वाइज किस तरीके से हम लेकर चले, किस तरीके से वो स्टेप वाइज फॉलो करें, सो दैट वी मे रीच द गोल. द गोल इज इफेक्टिव लर्निंग. The first is planning, the second is execution. For example, हम लोग आपसे मिले, we discussed that you require little bit of guidance on this particular topic. So we planned, कि come on, let's make a group, let's make certain videos, short videos for the purpose of revision, and now is the time for execution. The third will be, जब आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे, that will be the assessment. You will be able to understand कि okay, हमने ये पॉइंट भी कवर किया. And the fourth part will be the reflection, the final end, जो आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इससे फायदा हुआ, या हमारा टाइम वेस्ट हुआ, या हमें फर्दर और कुछ करने की जरूरत है. Now, this is very important, the recent trends in pedagogy paradigm. G.E. Miller एक थिंकर हैं, रिसर्चर हैं, उन्होंने कहा that teaching method which places learner in active learning position to be effective than which is not. आजकल हमारा पूरा ट्रेंड छोटे बच्चों से लेकर कॉलेज लेवल, हायर एजुकेशन तक लर्नर बेस्ड अप्रोच हो चुका है. यानी कि whereby we put focus, special focus on the learner, the student. The student is given the power, what you want to choose, what you may not want to choose. इसी के साथ ये बहुत जरूरी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बिल्कुल मिस नहीं करिएगा. I will try to share the brief notes, the short notes for the purpose of revision, but try to have a look on National Education Policy 2020 because there may be more questions in your exam from that particular domain, as well as Swayam portal. आजकल that is also the current trend, और उससे भी आपको कुछ क्वेश्चन नेट JRF में मिल सकते हैं. So the whole idea of the recent trend, which is learner-based program, is that all learners are different. कोई एक स्टूडेंट है जिसको म्यूजिक और फिजिक्स दोनों समझ में आता है, वहीं पे एक स्टूडेंट है जिसको मैथ समझ में आती है, इंग्लिश समझ में आती है, एक स्टूडेंट है जिसको आर्ट्स और साइंस साथ में नहीं पढ़नी है, जिसको शायद लॉ पढ़ना है. सो हियर द टीचर इज नॉट सीन एज merely the giver of the education, बल्कि हमने ये मानते हैं कि लर्निंग शुड बिकम एन एक्टिव डिस्कोर्स ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर. लर्नर जो पढ़ना चाहता है, जो सीखना चाहता है, दैट शुड बी इन द फोकस. एंड सो द लर्निंग टेक्निक, द टीचिंग टेक्निक should be an active engagement between learner and teacher. ये जो पर्टिकुलर स्लाइड में मैं आपको चार्ट शेयर कर रही हूँ, प्लीज गो थ्रू इट, आराम से इसको देखिएगा. You may find assertion reason based questions out of these points or something surrounding it. Assertion reason questions कई बार confusing होते हैं, तो ऐसे में क्वेश्चन को दो बार रीड आउट करिए, समझिए कि क्या वो उसका कारण है भी कि नहीं, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आप उनको समझिए, और उसके बाद दो बार पढ़ने के बाद देन मेक योर फाइनल आंसर, राइट? So यहाँ पे the idea is that the learner is in the focus now. This is the new paradigm shift whereby
it's not just the teacher-based teaching, but learner-based or student-based teaching. What the students want to learn, how they want to build up the course they want to take up, and so the curriculum follows. अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक की, जो है टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथडोलॉजी आप सभी ने एलएलएम में डेफिनेटली कवर किया होगा। ये बात अलग है, वी डू नॉट गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द सब्जेक्ट बिकॉज व्हेन वी हैव मोर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स तो हम इस तरीके के टॉपिक्स को मोर और लेस एग्जाम क्लियर करने के लिए भी पढ़ते हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर पोजीशन। सो द टीचिंग मेथड्स हम तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। One teaching method is about telling. For example, what I am doing right now, I'm telling you, which is based more or less on lectures. जहाँ पे एक टीचर है जो आपको कुछ चीजें बता रहा है, which could be followed by discussion, question answer, but hereby आपका जो वॉइस मोड है that is more active. आप articulate कर रहे हैं. So the first teaching method is primarily telling based. The other is showing based, which is based on demonstration, exclusion, multimedia. For example, मैं आज आपको एक वीडियो दिखाऊं या फिर मैं एक साइंस एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊं या फिर आपको कुछ स्लम वॉक पे या मार्केट वॉक पे या जेल प्रिजन वॉक कहीं पर लेकर जाऊं. That is the other teaching method which talks about discovering, demonstration, exclusion. And the third is doing, which is more or less a project, a laboratory, discovery. आप सभी ने अपनी थीसिस लिखी होगी, आप सभी ने अपनी डिसर्टेशन लिखी होगी, आप सभी ने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं. That is more of doing. Showing or doing sometimes may be confusing, but showing is simply where the teacher is showing you something, is taking you out, is trying to tell you something through visual effects as well. And doing involves your own work, your own research, your own uh, problem solving capability. Now moving on to the teaching methods. जो हमारे सामने टीचिंग मेथड्स हैं उनको हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड्स में. टीचिंग मेथड्स को लेके आपको डिफरेंट बुक्स में अलग कैटेगराइजेशन भी मिल सकती है, उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा. हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं 5 मेजरली जिनसे नेट एग्जाम में यूजुअली रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कवर करने की. कुछ बुक्स में आपको टीचिंग मेथड्स को डिवाइड करते हुए बताया है learner oriented, teacher oriented teaching method, right? So do not be confused, they are more or less the same here because this is just a quick revision video for you. So हम बात करेंगे 5 मॉडर्न टीचिंग मेथड्स के बारे में मेजरली. But let's first of all do not miss traditional methods. Traditional methods क्या होते हैं? पहले हमारे यहाँ पे गुरुकुल परंपरा थी. हमारे यहाँ पे किस तरीके से हम पढ़ाते थे? Memory based learning was emphasized. So all these are teaching methods where there's a class, there's a teacher, a student is the recipient, teacher is the orator, mostly monologue and memory based, right? The later on, as the time grew, as we colonialized, as the new education policies are coming up, we have developed other modern teaching techniques. The first teaching method is lecture method. Lecture method is mostly about the teacher. There is a teacher who is giving you lecture, the instructor is the center of this method, and it minimizes the student interaction. For example, अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ. What is this? This is lecture method of teaching only, and it delivers information efficiently. आपके पास तक definitely efficient information पहुंच रही है. It may incorporate visual aids, but this provides uh, a sort of passive learning. आपको इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ अपनी बात आपके सामने रख रही हूँ. दिस इज इफेक्टिव बिकॉज वन टू मैनी फॉर्मेट हमेशा मिलेगा. वन टू मैनी फॉर्मेट, वन टू वन फॉर्मेट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको नेट एग्जाम में मिलेंगे.
बहुत कॉमन सेंस की बात है। आई एक्सपेक्ट यू ऑल एक क्विक रिविजन आप रखेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या कह रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि हमें पता ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं इस चीज के बारे में, राइट? And one other thing, this is definitely a cost effective way, right? Because कोई experimentation नहीं हो रहा है, सीधे सीधे I have to come, I have to deliver the lecture, you have to listen. So this is the lecture method. What are the efficient advantages of this lecture method? यहाँ पे आपके सामने स्लाइड में हमने इसको ब्रीफ आउट किया है। देयर कुड बी अदर एडवांटेजेस लाइक एफिशिएंट इंफॉर्मेशन डिलीवरी है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंटेंट है, एक्सपर्टीज है, अथॉरिटी है, एंड the most interesting part, this is flexible as well as structured. The disadvantages that follow is one size fits all approach hai. But this is not true for all. There are different students. There are students who may require special attention, right? And sometimes it also leads to overload of information. You may not even consume the whole information. एक लिमिटेड स्टूडेंट एंगेजमेंट है और काफी हद तक आप यहाँ पे डिपेंडेंट हो ऑन द इंस्ट्रक्टर even if you have questions you are not interacting, so this is a form of passive learning. Now moving on to the next method, which is demonstration method. Demonstration method प्रिपेयर करता है अपने स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड टास्क को एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी कोशिश रहती है कि हम सिंप्लीफाई करें, एनहांस करें, जो कॉम्प्लेक्स थ्योरीज है जो अभी तक आप टेक्स्ट बुक्स में पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली थ्रू विजुअल एड्स, एक्सपेरिमेंट्स आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करें। यू एक्सपेरिमेंट, यू सिंप्लीफाई, यू कनेक्ट इट विद द रियल वर्ल्ड एंड improve करें अपनी स्किल by observing, by replicating techniques. Could be a possibility कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है 3 साल तक आप प्रैक्टिस करें, could it be called a demonstration method before appearing for the judiciary exam? Just a food for thought. तो नेट एग्जाम में नहीं आएगा वो। So this is the demonstration method. The benefits of demonstration method, definitely it enhances understanding, it builds critical thinking. आपकी दिमाग में कोई भी चीज जो आपने एक्सपेरिमेंट करी होगी, जिसे कहते हैं ना पढ़ने से सुनने से बेहतर होता है देखना और उससे भी बेहतर होता है करना। Once you have a practical demonstration of anything, it will leave, it will promote a better retention in your memory, right? And it increases engagement. Even the students who have shorter attention span may be benefited from this particular teaching technique. The disadvantages, कुछ लोगों में एक नेगेटिव मोटिवेशन भी क्रिएट कर सकता है, राइट? उसके अलावा यहाँ पे it requires a lot of time, it requires practice, it requires patience, and sometimes यहाँ पे आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप मैनर में एक कॉस्ट ऑफ टाइम को प्रोहिबिट करते हुए इस मेथड को अप्लाई करना पड़ता है which makes it hectic, cumbersome and time taking, right? तो यहाँ पे इंडिविजुअली भी सबको मॉनिटर करना, मान लीजिए देयर आर 5 स्टूडेंट्स, दे मे एक्सपेरिमेंट इन देयर ओन वे, वन ऑन वन इंस्ट्रक्टर के लिए दिक्कत हो सकती है। सो दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस, जस्ट सर्टेन पॉइंट्स एक बार आप गो थ्रू करिए, मेजरली फोकस करिए कि आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करें इन पॉइंट्स पे, सो दैट यू मे हैव द क्लैरिटी। द थर्ड इज डिस्कशन मेथड। द डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग इज, आई थिंक, जो हमारे कॉलेजेस में सबसे ज्यादा हम अप्रोच यूज करते हैं वो यही है, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं इट शुड बी इंटरैक्टिव, पार्टिसिपेटरी, इट एनकरेजेस स्टूडेंट ऑटोनॉमी, आपके कम्युनिकेशन को बिल्ड करने पे काम कर रहे हैं। Whenever we are asking, do you have any problem? What do you think? What do you suggest? All these questions during a lecture, they are giving a hint towards the discussion method of teaching, right? और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपके हर सब्जेक्ट पे लागू हो सकता है, बीट आर्ट, बीट साइंस, बीट मैथ। So the types of discussion, इनसे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन नेट एग्जाम में आए, एक बार आप जरूर इसको देखिएगा। I am here simply putting up points for the revision. This is not
a thorough video, and I'll not suggest to invest a lot of time on this chapter. Rather, invest time in doing question. एक बार ये वीडियो देखते हुए आप क्वेश्चंस पे फोकस करिएगा. The first is problematical discussion. Focus on solutions. यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम आपके सामने रखते हैं, right? Where the teacher is dominating the discussion, has raised a problem, और अब यहाँ पे the class has engaged into the discussion. The second is dialectical discussion. Dialectical discussion focus करता है expression पे, comparison पे, different point of views पे, right? Now this is very interesting. Problematical discussion में teacher plays the dominant point. Questions rises from this particular aspect. Dialectical discussion में teachers are just the facilitators. The students play a dominant role in the discussion because there may be clash of opinions, there may be different point of views, and the students will be focusing on proving their point of view, on proving their point. And the third type is the informational discussion. The informational discussion is typically आपको कुछ issues है whereby you have considerable freedom to express on that topic, और जो कि आपके पास कुछ facts है, कुछ data है, आपके experiences हैं, you are sharing that. So that is informational discussion. So the discussion method, उसके advantages क्या हैं, disadvantages क्या हैं. Advantages ये हैं कि ये आपको एक सोचने पे मजबूर करता है. It stimulates your thinking, your interest. ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रूबरू कराता है. और डिसएडवांटेजेस ये हैं कि sometimes the instructor may not be very flexible, may have a clash of opinions with the students or learners altogether, or sometimes कंटेंट ऑफ क्लास या हम उस टाइम में जितना आपको कवर करा सकते थे, we may feel restricted. It could be time taking, and एक छोटे ग्रुप में ही effectively हम इसको undertake कर सकते हैं. How do you expect a class of 200 people doing discussion? That will be very difficult. Okay, so moving on to the fourth method, teaching method, which is programmed instruction method. Programmed instruction method, इससे रिलेटेड आप को कुछ कुछ चीजें क्वेश्चन में टू द पॉइंट मिल सकती है. आई हैव एडेड दैट इन द स्लाइड. Chronologically, Greek philosopher Socrates is said to be the first programmer who developed a program in geometry, which was recorded by his disciple Plato. Right? So यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है कि मीनिंग क्या है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड का. मीनिंग ये है कि हम आपको एक बेसिक प्रोग्राम देते हैं. पहले आपको ये करना है, नेक्स्ट ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक पढ़नी है, थर्ड आपको ये ऐसे करना है. फॉर एग्जाम्पल एक छोटे बच्चे को उठाते हैं. सपोज यू आर डीलिंग विद अ चाइल्ड, 2-4 साल का है, 3 साल का है, तो पहले क्या करेंगे. The program instruction will be आप उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे विद द अल्फाबेट, उसका रिकॉग्निशन इंप्रूव होगा. Then you will move towards the sound. Then you will move towards the word building, 2-letter words, 3-letter words, and then towards the sentences. Then you will storybook. So this kind of a structure is called the program instruction method. आप एकदम से सोचिए कि हमें सब समझ में आने लगे. That is not possible. So we start off with the smallest thing. और यहाँ पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम से क्या है, प्रोग्रामर, राइट, या फिर एस एस चौहान and also first book of program instruction. This is Gita, the first program question is related to past to this question. Right? What are the characteristics of program instruction method? The subject matter is broken down into very small steps, which are called streams and arranged sequentially. ये जो characteristics मैंने यहाँ पे तीन समझते हैं, इसके रिलेटेड आपको सिर्फ these questions मिल सकते हैं. Sequence response is required out of these students. We move to the other stream. Once we are satisfied that the child has
किया है तो इस there is a possibility कि इसको कुछ समझ में नहीं आया है, there is something wrong with the child is not coming up with a sufficient output, we may first tackle it altogether. So the principles involved in the program instruction method are that it includes knowledge test, active participation in the test, reinforcement, self-stating, self-evaluation, and you definitely get very good feedback. The method was originally popularized by D.S. Skinner. Now this is very interesting. Father of programming instruction is D.S. Skinner, who is considered the first programmer, is Socrates. You will make that questions around this factual information that is where I received it. Slide. What are the advantages, disadvantages? Advantages सबसे बड़ी ये है क्योंकि स्मॉल अमाउंट में छोटे छोटे मामले हमने पूरा का पूरा आपका जो लर्निंग मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन किया है इनटू डिफरेंट स्टोरी तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रियली गाइडेड टू यू गेट बेस्ट रिजल्ट यू आर एबल टू थिंक लॉजिकली क्रिटिकली एंड आप छोटे छोटे एरिया से फोकस करके अपने आप को ले सकते हैं but the disadvantages of achieving this long time right and it just provides you a particular technique. It does not leave enough space for you to explore. कि मैं अब इसकी जगह कुछ और तरीके से करना चाहूँ that does not happen because this is a very structured way of learning. Now the fifth heuristic method. Heuristic method is one of the most liberal methods in the modern teaching paradigm. Heuristic method is basically a pure discovery method of learning science and whereby the teacher is out of touch. The idea, this was interestingly developed by Armstrong, who was a professor of chemistry in London, and the whole idea was कि बच्चे को या स्टूडेंट को क्वेश्चन ट्राई करने होते हैं एंड द चाइल्ड द टीचर खुद के लिए अपने आप एक्सपेरिमेंट किया अपने आप को सीखे and it is very interesting in modern times when there are people questioning the whole education system, the unlearning or the postmodern era which has now reached its peak in 21st century. यहाँ पर सवाल आता है कि क्या जो उन्होंने सिखाया जा रहा है वो सही है या हम सब सिर्फ इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहे हैं एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बन के बैठे हुए हैं क्या ये हमको एक इंडिपेंडेंट थिंकर की तरह लीड आउट करता भी है so there are people who are talking about homeschooling या हम तो बच्चे को लेके पूरा वर्ल्ड घुमाएंगे and then let the child learn we're not going to send the child to school which is 8 to 2 p.m. or 8 to 3 p.m. Conventional studies are being studied so this is basically the heuristic method अगर आपने नहीं पढ़ा है नहीं सुना है ये क्या है जीसीसी but this is the whole idea so the no type of guidance is provided by the teacher. The teacher is merely there to fix problems or not child has to find the answer. For example, a teacher may set a problem, putting scenarios like कि यहाँ पे देखो इस चीज की शैडो अभी यहाँ पे है शाम तक इधर कैसे जा रही है and the child has to find the answer. Something like that. So the psychological basis of the principles of heuristic method, there are certain principles. The first is the principle of freedom, experience, activity, learning by doing is the basis. The principle of purposefulness, logical thinking, and individual work, creativity, sensitivity, are key phrases that is your heuristic method. The merits are the few groups, learning by doing is the best. हर एक बच्चे को अपने हिसाब से नॉलेज गेन करने के लिए मिलता है अपने आप वो सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल की तरह तैयार होगा जब these are very time consuming and quite impractical for all these reasons and the people who are average people average students may not find it very workable extra work is needed and it is a costly investment in there are
certain other modern teaching methods जो हम आपको यहाँ पे started to दे रहे हैं. If you find some problem or some question on these particular topics, Google will ask you through my email, right? So, flipped classroom, tactile learning, creative learning, all these are the modern teaching methods which are being used. Now, moving on to another very important topic because हर बार हर साल एग्जाम क्वेश्चन आते ही हैं which is teaching aids. What are the types of teaching aids? मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन के वॉइस ओवर करते हुए ये लेक्चर शेयर कर रही हूँ. This is the teaching aid. So the teaching aids can be broadly classified into visual teaching aids, audio teaching aids, audio visual teaching aids, and further we have divided the teaching aids, audio-visual teaching aids into projected, non-projected, and electronic aids. Projected are slides, films, LCDs, projectors, conferencing projectors. Non-projected could be books, journals, chalkboards, charts, models, and next up we are moving towards the end most probably. So next up we have electronic methods like computers, internet, and now AI definitely. So here we have some questions. I have compiled four questions for you, जो कि previous years से ही मैंने निकाले हैं, so that you can understand. ये questions इससे बाहर नहीं आते हैं. The whole idea is थोड़ा common sense चाहिए. हर एक आप एक setup देखिए कि teaching aptitude है क्या. You should not feel least confidence की यार ये तो मैंने उठा के ही नहीं देखा या पढ़ा ही नहीं. You all have cleared your LLM. You all must know कि ये कैसे होता है, इसके अंदर क्या टॉपिक है. So there are certain questions. This is a statement based question whereby you have to select the correct alternative. The first statement is teaching is the same as training. Second, there is no difference between instruction and conditioning ability. Third, teaching is related to learning. Fourth, teaching is a task. Word while learning is an achievement word. Fifth, teaching means giving information. And fifth, one will teach without learning taking place. Which one is the correct answer? So, there are certain questions. जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आराम से आप अपनी स्क्रीन को पॉज करते हुए पढ़ें. देखें. This was a question which is asked in 2016 college. And there the correct answer is point 3, 4 aspects. The third point is says teaching is related to learning. Teaching is a task, while learning is an achievement, and teaching means giving information. The next is again, what are the factors that affect teaching? यहाँ पे आपके सामने कुछ points हैं, and then there's the answer. So आप इस तरीके से इन questions को एक बार देखेंगे, you will get more clarity. See, the other question which talks about combination of methods of teaching is likely to optimize learning. Which combination of methods? तो यहाँ पे 4 options आपको दिए हैं. So which combination of method आप यूज करेंगे? Interactive